राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चुने जाने पर बधाई। आइए समझते हैं एनएएस फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। SCERT, DIETs, BRCs, CRCs, बीएड या एमएड इंटर्न के कर्मचारियों में से जिला नोडल अधिकारियों द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर को नामित किया जाता है। बिना किसी संदिग्ध गतिविधि, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से सर्वेक्षण परीक्षण करना एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है। एनएएस में एक सैंपल स्कूल में 5, 8 और 10 के प्रत्येक ग्रेड को जिला नोडल अधिकारी द्वारा एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI नियुक्त किया जाता है। युवा छात्रों को बेहतर समर्थन देने के लिए ग्रेड 3 को 2 FI के साथ आवंटित किया जाता है। आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप निर्धारित समय के अनुसार नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलने के बाद उन्हें अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आपको स्कूल प्रमुख से नामांकन या उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और फिर सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित कमरे में जाना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण कक्ष छात्रों के लिए उपयुक्त है, आप बेंच, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि के लिए कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ये भी सुनिश्चित करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए कक्षाएं ग्राउंड फ्लोर पर हों और यदि आवश्यक हो तो एक लिखने वाले व्यक्ति स्क्राइब का भी प्रावधान है। एक बार ये हो जाने के बाद उपस्थित रजिस्टर का उपयोग करके ऑब्जर्वर की उपस्थिति में छात्रों के सैंपल्स के साथ आगे बढ़ें। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और ऑब्जर्वर एक साथ उन छात्रों का चयन करेंगे जो एक विशेष ग्रेड के लिए NAS 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉड्यूल्स में समझाया जाएगा। एक बार सैंपलिंग पूरी हो जाने के बाद केवल सैंपल किए गए छात्रों को ही सर्वे रूम में बिठाया जाएगा। फिर ऑब्जर्वर से टेस्ट बुकलेट, OMR और PQ एकत्र करें और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट बुकलेट और OMR वितरित। Welcome and thank you for choosing to view this training video to understand what is an OMR and how to use it for NAS 2021. Now, first let us understand what is an OMR sheet and what does an OMR sheet look like. OMR stands for Optical Mark Recognition, is a sheet used to capture responses for an MCQ-based test, assessment or survey. The OMR sheets show all possible answer options for a question in circular forms which the student needs to fill to record his or her response. An OMR sheet has multiple sections that a student needs to fill carefully. First, on the top of the OMR sheet, the student needs to fill in his or her name and the class roll number. All the other school-related information is pre-filled. In the next section, we capture the class section of the student, the age of the student, and other details. Here we fill the appropriate circle and record the response in the square as well. The adjacent section asking for student demographic data would be filled by the FI with the help of the teacher in charge present. The FIs can leverage the student enrollment register to get this data. Additionally, all general instruction about the OMR is also provided on the back side of the OMR. Now let us understand how to fill an OMR sheet correctly. On the day of the survey, the field investigators will also demonstrate how to fill the OMR sheets correctly and ensure that all students follow the correct way to fill their OMR sheets as per the steps shown in this video. Let's now understand the correct way of filling the OMRs. This is the correct way of filling the OMRs, that is, filled completely. Now let's understand how not to fill the OMR sheets. Marking a tick mark, marking a dot, or not filling the OMR completely are all incorrect ways of filling the OMR.
Also, erasing or marking two options or overwriting on the OMRs are all incorrect ways of using the OMRs. On the day of the survey, FIs and observers will assist grade 3 and 5 students in filling the OMRs completely and correctly. FIs and observers can take all reasonable measures to ensure grade 3 and 5 students are comfortable filling the OMR sheets. Thank you for watching this video. We hope now you have a better understanding of how to fill an OMR. Welcome back. In this module, we will learn how to get the PQ, SQ and TQ filled accurately from different respondents. Do you know what PQ, TQ and SQ stand for? PQ stands for Pupil Questionnaire and is a background questionnaire to be filled by the students. TQ stands for Teacher Questionnaire and is a background questionnaire filled by the teachers teaching the respective subjects for that particular grade. For example, for grade 3, TQ will be filled by subject teachers teaching language, mathematics and EVS in the respective sampled school. TQ will be filled by the teachers of only the selected section, or in case of multiple sections, the section from which the maximum number of students will be selected. SQ stands for School Questionnaire and is a background questionnaire filled by the school head or school principal head of school. But why do we need to get these questionnaires filled? These questionnaires help us get the associated and background information such as perceptions, demographics, and available resources which may affect learning. These questionnaires help us correlate NAS results with multiple variables and thus understand the results better. Now, how and when to get your questionnaires filled? The filling of questionnaires will be coordinated by F1 and supported by the observer. As soon as the main NAS test ends and OMRs are recollected, the FIs need to begin the filling of PQ. For grade 3 and 5, the PQ will be filled in an interactive mode with the FI asking the questions one by one and noting down the responses on the PQ OMRs. In the interview mode, please ensure a few things. Make the child comfortable before asking the questions. Please read out the question as it is. Rewording or rephrasing the question may lead the child to answer in a particular way. Make sure you capture responses for all questions. The background or demographic information on the first page of PQ can be school or class register. For grades 8 and 10, FIs can simply distribute the PQs to students who fill the responses on the response sheet on their own. Before collecting and excusing the students, ensure that all responses have been filled. For SQ and TQ, you may hand over the questionnaire to the school head and teacher in charge before the commencement of the survey and collect them after all other NAS duties have been fulfilled. Ensure that the questionnaire are filled completely. With this, you have successfully completed your module for filling PQ, SQ and TQ.